Hi everyone, this is Cricbucks. We are back with another video. Today we are reviewing South Africa versus Australia's post-match analysis on their very amazing performance. अब अमेजिंग परफॉर्मेंस किसकी थी ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की कि उन्होंने बहुत पीछे से अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया हारने से या फिर साउथ अफ्रीका जिन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया बाय बैटिंग एंड ग्रेट बॉलिंग. So South Africa scored 311, and Australia were chasing that target, but they got out. But they got bundled out for 177 in 40.5 overs. So we have our whole panel over here. We're going to talk about these performances and who stood out in this whole match. So why don't we start with a better bowling performance, because I feel that was the main highlight of the whole match, and the South African bowling was really good. What do you think about that, guys? Kush, what do you think? Who was the standout bowler for you, and what are your take on the South African bowling? Well, there was no rocket science. Standout bowler was लुंगी एनगिडी बिकॉज उसने शुरू में प्रेशर कर दिया था, लेकिन आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हुआ कि अफगानिस्तान वाले येलो जर्सी पहन के खेल रहे थे. जो बैटिंग थी वो I बिल्कुल know. वैसी थी. और अचानक से क्या हुआ, जैसे ही वो 70 पे 6 आउट हुए ना, फिर वो कहते हैं अब टेस्ट मैच खेलते हैं चलो. ऑस्ट्रेलिया राइट. फुल ऑन अपने मोड में चला गया था टेस्ट वाली. या लाइक आई कंप्लीट लाइक क्या परफॉर्मेंस था ये, क्या था. ऑस्ट्रेलिया को मैंने आज तक कभी ऐसा खेलते हुए नहीं देखा भाई. Seriously. आई एम फॉलोइंग क्रिकेट लाइक सिंस 1996 वर्ल्ड कप से, जिसको जो मुझे अच्छे से याद है. ऑस्ट्रेलिया को मैंने कभी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा. ये क्या परफॉर्मेंस है भाई. आप क्या बैटिंग कर रहे हो, 300 रन की क्या चेज हो रही है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया. बट लुंगी एनगिडी वाज द बेस्ट बॉलर इन माय Nice. ओपिनियन. Abhishek, what do you think? Yeah, I think Rabada, especially with the wicket of Smith, जो उसने ली and John English की जो उसने wicket ली, right? So that was Smith's wicket was actually the turning point. उससे पहले I think कि शुरू हो गया था उनका, मतलब partnership was going on. I still had hope कि ऑस्ट्रेलिया कुछ कर जाएगी till the time Smith and Labuschagne were batting. But I think Lungi Ngidi and Rabada were both good, but for me Rabada. Because he took the wicket of Smith and changed the game and so probably won the match for South Africa there and then. Rest were formalities. What about you, Sid? You don't look happy. Your face is showing that Australia lost the match, and you're not happy about that. Is that so, my bro? No, I'm just having a bad headache, bro. Just one Is of it those after days. looking at Australia's performance? No, just looking at my own team's performance at work. But I think yeah, both the ballers, the African ballers, Lungi and Giri and Rabada bowled really well. Like to Kush point, Nigiri like set the tone for the bowling by bowling pretty tight, and like there were two maiden overs, I guess. That was pretty good. And like once you're chasing 300 plus, and with the batting lineup, Australia has, especially like Labouche and Smith, they won't score at like 150, 160. So it was gonna be tight. And hats off to South Africa. They played a complete game, like batting, bowling, fielding department. And on the contrary, uh, Australia was lacking in every department. So yeah, a good win for South Africa. I guess if Australia loses one more, they're out, right? They won't be It able will to be qualify. difficult. I think then they will be reliant on a lot of other results, and their run rate, which is right now has taken a big blow. I think they're minus 0.08 or something, right? Yeah, Yeah. right. So I think बट improving that will be hard. Yeah, sorry, Kush, बट you have something. आई जस्ट वांट टू करेक्ट इट. एक्चुअली रबाडा ने आउट नहीं किया स्मिथ को, क्विंटन डिकॉक ने आउट किया है. को एक्चुअली रबाडा ने आउट नहीं किया, क्विंटन डिकॉक ने किया है. और रिव्यू किसी को लेके नहीं, आउट किया. Okay. वो किसी को नहीं लग रहा था कि वो आउट है. सिर्फ उसको क्विंटन डिकॉक को, जब उसने बबूमा को बोला रिव्यू लो. हाँ, Yeah. नहीं अग्रीड. और मुझे पहली बार में मुझे भी ये लगा कि वो डिसीजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, बट देन जब हाँ. दोबारा रिप्ले में दिखाया और जब स्पिथ का इम्पैक्ट कहाँ था और कहाँ फिनिश अप हुआ, उससे लगा कि हाँ इट वाज मच मोर क्लोजर देन इट वाज लुकिंग इन रियल टाइम. तो आई थिंक But वो देख के मुझे Josh, यू आर राइट, दैट्स अ क्विंटन डिकॉक Josh विकेट. English को क्या बॉल करवाई थी यार बाडा ने? यस, करेक्ट. ओ या Seam. वो तो Yeah, भाई that गजब was बॉल, वो तो कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता है यार. unplayable. And just a reminder, guys, Rabada was my X factor for South African team. So हाँ हाँ, बस इकलौती टीम में तेरा एक एक्स फैक्टर चल रहा है. बाकी तो किसी you टीम में कोई Pandya चल ने नहीं भी रहा. 2 विकेट लिए पिछले मैच में, प्लीज.
अच्छा तो क्या हो गया, मैन ऑफ द मैच मिला क्या उसको, पांड्या को? But anyways, no, good sum up of the whole bowling performance by South Africa. Now moving before we talk about Australia, because I feel वहाँ पे काफी कुछ बात करने को होगा हमारे पास. I want to come to South Africans batting. उसके बारे में क्या ख्याल है? Quinton de Kock, two back-to-back hundreds, hits his last World Cup for South Africa. He's looking totally pumped. I think he wants to do something for his country before he says goodbye. And I think his hundred set up the tone. What do you think about that innings, or any other batting performance which stood out for you? यार आई थिंक मैंने अपने उसमें भी हमने जब ऑस्ट्रेलिया का एनालिसिस किया था तब मैंने यही चीज बोली थी भाई, आप इतने ज्यादा ना ये जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं कि जो अब पता नहीं है कि कौन से कब बैटिंग करनी है और कब बॉलिंग करनी है, आप इतने प्लेयर्स लेके नहीं खेल सकते हो, राइट? साउथ Correct. अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका 6 बैट्समैन लेके खेल रही है, लेकिन वो 6 प्रॉपर बैट्समैन है। Right. जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास भाई दे आर दैट काइंड ऑफ अ टीम कि आप 200 रन की स्टार्ट दे दो पहले 30 ओवर में तो हम 400 रन बनाएंगे, क्योंकि स्टॉइनिस, मैक्सवेल ये सारे एंड में आके मारेंगे, लेकिन इनको ज्यादा ओवर बैटिंग करने को मिल जाए ये लोग नहीं खेल पाते। जो तो भाई आज आप दिखा अपनी ही है हमें. आज दिख गया, आज स्मिथ लबुशेन के अलावा जब स्मिथ लबुशेन और वार्नर आउट हो गए थे मैच वहीं पे खत्म हो गया था, उनको पता ही नहीं था अब इतने ओवर बैटिंग कैसे करें। That's true. That's true. What do you think about that, Abhishek? नहीं, agreed. I think Quinton de Kock की batting तो obviously मतलब कोई question ही नहीं था. He obviously turned the game on. 311 में से अगर कोई बंदा 100 कर जाता है, obviously. But मुझे more concerns of obviously Australians batting. They haven't really looked settled. दोनों innings में, in fact चेन्नई में भी I did not think it was an unplayable wicket. It was not a 199 wicket. They should have scored at least 250. आज But भी it was that's where you have to give credit to Indian bowlers. absolutely. और मैं वही Yeah. and today's bowlers as well. I mean, speaks volumes about South Africa's bowling as well as India's bowling. That you have stopped a decent team at a very low score. And Apparently, they दोनों had मैच में I think Australia was not able to reach 200, right? 200 exactly 199 and 177. and So 177. So yeah, I think South Africa की batting definitely, obviously, QTK was the standout. It's his home ground as well for Lucknow Super Giants. Lucknow Super Giants, huh? right. That's a good point Yeah, as well. So he has right. So experience playing on this he has ground. experience, and in fact, in his post match, he did say that he was expecting the wicket to behave the same way. First 25, 30 overs, it was going to play well, and then it was considerably slowing down. And I Right. think he उसने यही बात बोली थी, and he stood out. He made the most of his chance. And And that's a good point mentioned because that's the beauty about South African batting. चाहे वो 6 बैट्समैन से खेलें पर सब 6 के 6 जो है उनको आईपीएल का काफी एक्सपीरियंस है and they've played all across India. So I think that is also helping them out. What do you think about that, Sid? Yeah, for sure. Experience counts. On the flip side, if you see Australia, only like top 3 or 4 have IPL experience, right? So certainly it adds up. But just coming back to Australia is like they're looking out of sorts. Totally, even like coming back to India game when Warner and Smith had like a little partnership going on, it didn't Mhm. look impacting at all. They didn't like threatened us at all. There was not even a single ball where we thought like, oh, they're gonna take the game away. Even like today, their players are not looking impactful. Whereas like if you look at South Africa, Quinton de Kock from ball one, he was like had that impact on the game. And Aiden Markram, I feel like uh, the previous game against Sri Lanka and this game, he just comes and like scores at Mm. such a high High rate. tempo. Yeah. And they again like for me any time like you have to deliver in these big tournaments, your top players have to have a dream run. And from that, like Quinton de Kock back-to-back centuries, Aiden Markram is looking really good. I had my doubts about South African bowling, but they came so good today. Right. Yeah, like they are looking You Right. a know, threat now. I Yeah. feel like my if Australia loses the third match, I might have to rejig my top 4. Yeah, that's a For good sure. point. Yeah, Kush. the coming to that, आज हमारे पास ना वैसे देखा जाए तो इतना सब कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, बिकॉज वन टीम शोड अप एंड वन टीम डिडंट शो अप। Yeah. Yeah. बट Sure. मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, वो तुम तीनों बताओ यार कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कभी इतनी ज्यादा वल्नरेबल कैप्टनसी देखी है ऑस्ट्रेलिया की कि मतलब ये क्या कैप्टनसी है, राइट? That's a कि आप very good No. point. और दूसरा
भाई ऑस्ट्रेलिया कब से 6 कैचेस छोड़ने लग गई मैच में। मुझे Exactly. मुझे इंडिया के मैचेस याद आते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच हो रहे थे भाई, ये पता नहीं कहाँ से कैच पकड़ लेते थे यार किसी भी प्लेयर की। कोई एक Right. प्लेयर अच्छा चल रहा है, इफ यू रिमेंबर 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, चाहे जो भी था, लेकिन हम सहवाग 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 कर रहे हैं, वही उसको रन आउट कर दिया उन्होंने। या ऐसे ही सेमीफाइनल में भी जब ये थे, अरविंदा डिसिल्वा रन मारा था, उसको रन आउट कर दिया। इन लोगों की फील्डिंग, अब मतलब मैंने इतनी खराब फील्डिंग और इतनी खराब कैप्टनसी आज तक कभी नहीं देखी ऑस्ट्रेलिया एंड में। आई जस्ट वांट टू से दिस, मैंने जब जब हम इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड रिव्यू भी कर रहे थे, मेरा Stark doesn't have a lot of experience in doing ODI captaincy. It's coming. Cummins is the captain. Sorry. This is यही पॉइंट था कि मेरे को स्पेकुलेशन थी कि भाई पैट कमिंस हैज डज नॉट हैव एक्सपीरियंस कैप्टनिंग इन द मिचेल ओडीआई एज वेल। स्टार्क। मेरा एग्जैक्टली द पॉइंट, राइट? मेरे को बिल्कुल स्पेकुलेशन थी उसकी कैप्टनशिप में, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। आई थिंक वो उसका यूज केस भी बड़ा कम है, उसने कम कैप्टनसी की है। सो दैट वाज डेफिनेटली द केस। एंड कमिंग बैक टू catches, yeah, they, as they say, yeah, catches win you matches. It was as simple as that. They dropped it big time. But Yeah. again, like Australia 50 over game for a couple of years, they haven't been there. I'm not sure whether they have like are not focusing on 50 over game. Their whole attention is towards Test cricket, T20, but they haven't seemed like a settled squad. Means again, I'm not writing them off just because they are Australia, but Right. they have like honestly looked the least uh impactful team out of the top Test playing nations. Fair enough. Abhishek? Yeah. नहीं मुझे भी ऐसे लगता है एक्चुअली आई थिंक मुझे बिफोर एवरीबडी jumped on this call we were just discussing right they're two spinners Zampa and Maxwell's only doing well because India में finger spinners ज़्यादा चलते हैं as opposed to wristies right small grounds due and everything finger spinners obviously get a lesser of an advantage in due but मुझे ऐसा लगता है Nathan Lyon would have been a decent or an interesting choice for this squad if they were to if they're not were not using Easton Agar right so Yeah. I think उनके स्क्वाड में काफी हिट एंड मिस है आई डोंट सी ट्रेविस हेड वापस भी आएगा तो कहाँ where does he stand right where what would they do with him कहाँ उसको बैटिंग कराएंगे who to drop I mean I know बहुत सारे रीजी होंगे अभी उनकी टीम प्लेइंग 11 में but I don't think I've seen a more vulnerable Australia ever I mean to your point question I don't recall that ever happening. मतलब Ricky Ponting, Steve Smith leading into Yeah. their first World Cups and, Yeah. and Michael Clark. Right. I think it's a miss. Pat Cummins' captaincy, not just here. I think we've also observed in tests as well. It's not been up to the standard. Sure. He's been reliant on Smith, so definitely yes. पिचेस भी यार, पिचेस भी ना एक्चुअली, अब ऑस्ट्रेलिया बीइंग अनलकी टू, लाइक उन्हें आते ही ना वो चेन्नई और लखनऊ की पिच मिल गई। इनकी जो जैसी बैटिंग है ना, इनको चाहिए बैंगलोर जैसा, दिल्ली जैसा फ्लैट विकेट, तो Yeah. ये कुछ कर सकते हैं, तब ये दे कैन बीट एनी टीम। देन ये इंग्लैंड So को हरा दें। does that mean Pakistan's going to feel the heat in Bangalore match against Australia? ओ या फॉर श्योर, फॉर श्योर। Yeah. Yeah. My money is on Unless Australia in Bangalore that wicket be match. turning. या Yeah. अच्छा guys, Yeah, I know, I think, Go ahead. sorry, I just want to wrap this up, but मैं एक last question आप सबसे पूछना चाहूंगा, as a Australian captain और as a coach, आपका क्या मैसेज होना चाहिए अपनी टीम के लिए? What is that conversation happening in that dressing room, and how are you going to approach moving forward the tournament? Push, what do you think? यू नो, ये मैसेज 99 वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ ने दिया था कि भाई हर गेम हमारा एक नॉकआउट है और हर गेम हम एक वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 गेम हुए हैं, दोनों अच्छी टीमों से थे उनके गेम, राइट? Right. तो अब 7 गेम बचे हैं, 7 गेम 7 नॉकआउट गेम्स की तरह खेलो, एंड दे कैन स्टिल डू इट यार। दे हैव द Yep. स्क्वाड, दे हैव द टैलेंट, सो दे कैन स्टिल डू इट। Go ahead. Good one. Abhishek? Yeah, मेरा मैसेज ये होगा कि the thing that is absolutely in your control, you should do it the best you can. Fielding, catches, fielding, good stops. I think that pumps up everybody else as well. Batting and bowling, you know, maybe somebody's having an off day. Somebody can get a snorter of a delivery. Somebody can get a bad decision as well, right? But fielding is something that is in your control. That's 100% your area. Requires zero skill, mostly speed. So I think that's where they should step their game up and bring the Australia back to the field. Sure. Sid? But Abhishek, as no, as a coach, what would be your comment? That's इस 70 KD's में question.
ये 70 मिनट That's वाला my भाई डायलॉग that's है। my 70 नहीं, line. 8 घंटे That's हैं। my line. As हाँ as मतलब a ये 50 ओवर। as a coach, मेरी लाइन होगी ये 7 मैच, जैसे खुश ने बोला, स्टीवा ने बोला था नॉकआउट, मैं थोड़ा उसको बॉलीवुड ड्रामा करके बोलूंगा ये 7 मैच, ये 7 मैच तुम्हारी जिंदगी की शाहरुख खान लास्ट सात वाले मैच हो स्पीच देगा सकती है। तुम्हें, है ना? स्टीवन सही है। स्मिथ और ये वार्नर को बोलूंगा ये 7 मैच तुम्हारी जिंदगी के लास्ट 50 ओवर 7 मैच हो सकते हैं। थैंक यू, तो थैंक यू फॉर और ब्रिंगिंग ये दिस वो कोच की तरफ बॉलीवुड से आएगा, एलिमेंट। फिर कमिंस की तरफ से आएगा, गाइस पूरी टीम को का नहीं जस्ट बताना हैव। मेरे भाई। भाई तूने बोला था कैप्टन और कोच का अच्छा, पूछो सॉरी यार, सॉरी, आप प्लीज एंकर यार, बने आई हो, एम अच्छी तरह सॉरी, बनो यार, आई एम प्लीज यार। सॉरी। प्लीज आप बताइए, पैट कमिंस क्या Yeah. बोलेंगे पैट और मिचेल कमिंस स्टार क्या बोलेंगे? भाई अब आप मिचेल स्टार्क ऐड कर रहे हो। ये मेरा कैप्टन तो वही था ना। Okay. कटेगा, सब But कटेगा। going by थैंक the यू। official captain Cummins यही बोलेगा, guys just go have fun. थैंक्स Mitchell Stark, एंड KD can give the हाँ reviews. जी। So as I just want to wrap this up, guys. Thank you for your comments. Just wrapping this up. Let's not write off Australia. Australia is the only team who can still win this World Cup because they have that mental strength to go ahead and cross that finishing line. So thank you for watching our video. Please like, subscribe, and share. This is Cricbucks. We'll be back with another video very soon. It's India versus Pakistan coming soon, guys. And we'll be back with our banter video. Yeah. Boom. Thank you. Okay.